Hi students, welcome to this class, and I am starting today the classes for class 12, which is very important. I am sure you all understand. ये जो क्लास 12 है इसमें आपका पढ़ाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप आज तक जो आपने पढ़ा है और क्लास 1 से लेके अभी तक आपने जो पढ़ा है वो इसीलिए कि क्लास 12 में आप आए और आप अच्छा करें. सो naturally the motto is to do very well in class 12 so that you can appear in the competitive exams and have a very bright future according to your choice. तो इसमें पहले है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो भाई रिप्रोडक्शन तो क्यों ज़रूरी है, हम लोग सब जानते हैं कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो हम नहीं होते, कोई भी ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू नहीं होता. हम लोग जो इतना सारा देख रहे हैं, इतने सारे एनिमल्स देख रहे हैं, इतने सारे प्लांट्स देख रहे हैं, तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो ये कंटिन्यू हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? देयर मस्ट बी सम प्रोसेस दैट इज रिप्रोडक्शन. कोई ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से कंटिन्यू हो रहा है ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन. सीधी सी बात है. तो भाई अब रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? दिस सेक्सुअल, एसेक्सुअल. पहले एसेक्सुअल की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले इसके पहले प्रोसेस में जाने के पहले ये भी ज़रा सा सोच लें कि हर ऑर्गेनिज्म का, हर जो ऑर्गेनिज्म है, कैन दे लिव फॉर एजेस, फॉर एवर? नो. कहीं तो एंड होगा, तो उनका लाइफ स्पैन होता है. तो लाइफ स्पैन किसका क्या है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो. तो ये भी आप इसमें जान लें, आपके एनसीईआरटी बुक में है पूरे. कुछ ऑर्गेनिजम्स के हैं, जैसे एलिफेंट का कितना है? 48 ईयर्स है इंडिया में. और सबसे छोटा लाइफ स्पैन किसका है? यहाँ पे बटरफ्लाई का है, 1 to 2 वीक्स. ये हम कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि लाइफ स्पैन किसी का बहुत छोटा है और किसी का बहुत बड़ा है. जैसे कि टॉर्टवाइज का 100, 20, 50 ईयर्स है, लेकिन किसी का कुछ भी लाइफ स्पैन हो, सदा के लिए कोई नहीं बच सकता है, जिंदा नहीं रह सकता है. फॉर एवर रिप्रोडक्शन हैज टू बी देयर, है ना, सो दैट स्पीशीज कंटिन्यू. अब ये एसेक्सुअल, सेक्सुअल दो टाइप से हो सकता है. एसेक्सुअल में यूनिसेलुलर में होता है, एक सेल है, एक सेल का ऑर्गेनिज्म है. भाई है उसमें क्या? कुछ भी नहीं है, एक सेल है. जैसे बैक्टीरिया है, जैसे अमीबा है, तो कोई सेल ऑर्गेनिल नहीं है, कुछ नहीं है. तो कैसे होगा ये प्रोसेस? तो डिवाइड हो जाएगा सेल. डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल में बनेगा, 2 डॉटर सेल फिर इंडिविजुअल सेल्स बनेगा. सो दैट लाइक दैट इट विल कंटिन्यू द स्पीशीज बाय एसेक्सुअल मेथड. उसमें क्या क्या है आप लोगों ने पढ़ा है. अब उसमें स्प्लिटिंग है, बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. और रीजनरेशन है जो प्लानेरिया में होता है, फ्रेगमेंटेशन जो स्पैरो वगैरह अलगी में होता है. बाइनरी फिजन जो अमीबा और बैक्टीरिया में होता है. मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में होता है. So these all you have an idea about these processes. I need not elaborate them again. And वो फिर आर्टिफिशियल जो इसका प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लांट्स का कोई भी पार्ट रिप्रोडक्टिव हो सकता है, वेजिटेटिव हो सकता है. कोई भी पार्ट मतलब लीव, रूट या स्टेम. लीव से ब्राइफाइलम में बर्ड्स होते हैं, मार्जिन में देयर आर बर्ड्स एंड न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम देयर, germinate from there. Stem से पोटैटो है, कैरेट है. So these are the asexual, these are the vegetative modes. Root से जिंजर है. So root is also producing something, can produce a new plant, so can germinate. So these are the vegetative modes in plants which comes under asexual reproduction. ये सभी में क्या हो रहा है? सेल डिवीजन ही हो रहा है. सेल डिवाइड कर रहा है डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट सोर्स से. अब जो है एक और तरीका है जो दैट इज कॉल्ड दी
कल्चर ऑफ टिश्यूज, वो टिश्यू को लेके कल्चर करते हैं, उसमें कुछ हार्मोन देते हैं और इन पर्टिकुलर मीडियम उसमें से एक मास ऑफ सेल्स मिलता है जिसको कैलस बोलते हैं, और कैलस को फिर से कल्चर किया जाता है और एक छोटे छोटे प्लांटलेट मिलता है, बहुत छोटा पौधा मिलता है जिसको भी बड़े जगह में बिगर फील्ड में ट्रांसफ़र किया जाता है फॉर देयर डेवलपमेंट। सो ये जो नया टिश्यू का कल्चर हुआ, दिस इज ऑल्सो artificial method of vegetative reproduction, which is now very common. Nowadays it is in use. और मेथड जो है वो आप सभी जानते हैं, लेयरिंग है, आपका ग्राफ्टिंग है, कटिंग है, ऑल दीज मेथड्स आर ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब तो ये तो एसेक्सुअल हो गया, अब प्लांट्स बड़ा हो रहा है, बड़ा हो गया, बहुत हायर डेवलप्ड प्लांट्स हो गए। हाँ, प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक प्लांट्स भी मिलने लगे। जितने सारे प्लांट्स हम देखते हैं ज़्यादातर तो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक में तो उसमें हाईली डेवलप्ड सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, जो जिसलिए वो यूकैरियोटिक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। उसमें और सेल ऑर्गेनिल्स है जिसमें हर फंक्शन, हर मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। इसी के लिए सेल को क्या बोला जाता है? फंक्शनल यूनिट। तो हर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है हमारे अंदर वो सेल में भी हो रहा है। तो इसके लिए क्या है? स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ हैं। स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम का है। वहीं पर ना ये सब जूसेस मिल रहा है भाई, गैस्ट्रिक जूस मिल रहा है जिसमें गैस्ट्रिक एंजाइम है। कहाँ पे है ये? पेट में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में। सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी तरह किडनी में स्पेशल टिश्यूज हैं, किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए, टू गेट रीड ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस। उसी तरह रेस्पिरेटरी टिश्यूज भी हैं लंग्स में, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि भाई रिप्रोडक्शन के लिए भी स्पेशल टिश्यू चाहिए। वो क्या है? उनको गैमेट बोलते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट। अब प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर है, दो पेरेंट है, तो दोनों से कैरेक्टरिस्टिक लेना पड़ेगा, नहीं तो ऑफस्प्रिंग में क्या होगा? सिमिलर नहीं होगा। आम का पेड़ तो आम का पेड़ ही होगा ना, आम का पेड़ से अमरूद का पेड़ तो नहीं हो जाएगा। तो ये जो हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये दो गैमेट हैं, दोनों पेरेंट से ये गैमेट आ रहे हैं और फ्यूज हो रहे हैं। कहाँ पे हो रहे हैं? फूल में हो रहे हैं, क्योंकि फूल ही, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो अब इसमें अगर एक प्लांट में दोनों ही टाइप के फ्लावर है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। व्हाट इज मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर? ऑनली यू ऑल नो। The male part is androecium, is the stamen, I am revising, and this female part is the stem, gynoecium or the pistil or the carpel. तो एंड्रोसियम में क्या है? योर स्टेमन एंड फिलामेंट है। स्टेमन में अंथर है, अंथर में ही पोलन ग्रेन्स है जो कि मेल गैमेट है। और इसमें क्या है? इसमें फीमेल गैमेट कहाँ पर है? एक सेल है, वो कहाँ पे है? ओव्यूल में, एम्ब्रॉय के अंदर। और दूसरा पार्ट जो इसका है, स्टाइल और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ये तीन चीज़ है किसमें? कार्बल में और पिस्टिल में, और कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड गायनेशियम। तो ये तो फ्लावर में अगर दोनों ही है तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। लेकिन एक प्लांट में अगर दोनों टाइप के फ्लावर हैं तो वो मोनोशियस कहलाता है। अगर एक ही टाइप के फ्लावर है उस प्लांट में तो डायोशियस कहलाता है। तो दिस टर्म्स यू हैव टू रिमेंबर चिल्ड्रन। देन दिस sexual reproduction in plants take place when the pollination takes place and the fertilization takes place. You have studied this. जब pollen tube grow करता है and carries the sperm nucleus, and the sperm nucleus divides into two and one fuses with the egg cell in the ovule and forms the zygote. दूसरा जो है sperm cell, because one sperm cell has divided into two,
The second one will fuse with the two polar nuclei. So fusion is 3 times and fertilization is for 2 times. So double fertilization it is called in plants. Then zygote will be formed. Then what will happen? The ovary will be turned into a fruit and the ovule will be turned into a seed. फिर से सीड से नया प्लांट जर्मिनेट होगा एंड लाइक दिस प्रोसेस कंटिन्यूस. तो ये तो आपका हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. आपके बुक्स में कुछ पिक्चर्स हैं, उसको आप ध्यान से देख लेंगे. एनसीईआरटी बुक में सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बडिंग दिया हुआ है ईस्ट में, और अमीबा का दिया हुआ है binary fusion. You have all studied. So this you have to remember with leveling. अब कुछ पिक्चर्स इसमें है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में दिया हुआ है जू स्पोर्ट्स का. भाई स्पोर्ट्स से भी होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. स्पोर्ट्स जो जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? व्हाट दे आर कॉल्ड जू स्पोर्ट्स. और जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बहुत लोअर प्लांट्स या एनिमल्स में, उसको क्या कहते हैं? जाइगोस्पोर्स और oospores. So these pictures are there in your book. So in fungus we have studied in fungi that in Phycomycetes class what is happening? Asexual reproduction is happening by your zoospores, and the sexual reproduction is taking place by your oospores or ascospores or basidiospores. So like these spores are also there, which are taking part in asexual and sexual reproduction in very, very small organisms. So these pictures are there, you just go through them as I have discussed, and then we come to the sexual reproduction in animals and also in human. So sexual reproduction में male and female gametes चाहिए, as we have all seen, and there are two stages where one is pre-fertilization and one is post-fertilization. So fertilization is important because gametes सिर्फ होने से नहीं होगा ना. They have to fuse and combine and they have to form zygote. So this takes place by external, internally also externally. Internally जब होता है तो उसको internal fertilization बोलते हैं. External जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं? External fertilization. अब कुछ viviparous organism है, कुछ oviparous है. What are the viviparous organisms? Which produce young ones directly. And who are the oviparous? The organisms which lay eggs, and the egg is hatched to give birth to new organisms. So these is two types of reproduction which is take place in living organisms. Another type is parthenogenesis. That means that is the where fertilization does not take place, and the female gamete directly develops into a zygote, into a cell which further divides and gives birth to new ones. So that is parthenogenesis. There are parthenocarpic plants also, fruits also. So that is a very rare case of reproduction, but commonly what is happening? It is happening by asexual and sexual reproduction. In sexual reproduction we are talking about fusion of gametes. तो पहले gamete तो बनेगा, which is the process is called gametogenesis. जिससे male gamete is sperm, as you all know, and female gamete is egg or ovum. So this will be formed in different stages, and then fusion will take place. If it is fertilization will take place. Fusion of two gametes is called fertilization. That is also known as syngamy. अगर syngamy हो रहा है तो zygote will be formed, right? So two gametes have to fuse. So this syngamy can take place
in the female body or also outside in the external, in the environment, in the habitat. So that depends on the types are there in animals. So internal, all the mammals, even human beings, internal fertilization is taking place and they are giving birth to the young ones. After pre-fertilization, this formation of gametes are there in the after the stage of puberty. In female, what is happening? The cycle, menstruation cycle is starts, which is of 28 days commonly, and then why? How this is happening? Because of the presence of hormones. The female hormones are progesterone and estrogen. So they are maturing the cells, and then in the puberty, this menarche will take place. The first menstruation, and then the menstrual cycle will start. So maturity will be there, and then the female gamete, egg cell, mature egg cell will be released. So that is the stages are there. You have all studied the menstrual phase, that is the bleeding phase, and then your follicular phase where follicles are maturing, then the ovulatory phase. In the 14th day, ovulation will take place, and then a mature ovum will be released, and the uterus will prepare itself to receive the zygote. After fertilization, in the endometrium, it will become thick. In human, I am talking about. And when this fertilization, after the fertilization, the zygote will be implanted on the uterine wall. So this is all about the human reproduction in female, sexual reproduction. So these things will happen when the gametes are mature. And similarly, in the male part also, secondary sexual characters will be appearing, and the male gamete after gametogenesis, also called spermatogenesis, the mature sperms will be produced, and these sperms, after they reach the ovum in the fallopian tube of the female, then zygote is formed, and the zygote is implanted on the uterine wall, and then the morula is formed, which is after few stages becomes the embryo, and the embryo develops into fetus, and which is delivered, and the gestation period is about 280 days. So these are the details of the reproduction, sexual reproduction. In detail, in more detail you have to study. That will be in the following chapters. So I am just referring to the process when we are talking about reproduction in living organisms in general. Understood? So sometimes the gametes will look alike, sometimes and most of the times it are different. The organisms, male, female, and the gametes will also look different in plants as well as in animals. So those things are, I think, are there. Cell division will take place in when gamete formation, that is there in a book. So gametes are generally haploid, because haploid means N cells. Because when the somatic cells fuse, N plus N and N, that is 2N. But when gametes are produced, 2N in 2N, meiosis will take place, reduction division will take place, and N and N gametes will be formed, which are called haploid. The somatic cells are called diploid, and these gametes are called haploid. So haploid and diploid, these things you have studied in mitosis and meiosis. So in detail, maybe they are in these chapters. So we'll look into that. Also, there are other figures in your book which you should go through.
So these are all the sexuality and organisms. Diversity in sexuality. How plants sexual or this thing parts are being shown. The stamen, the carpel, the ovary. Like this, the ovary has been shown separately, and all these animals. Unisexual animal example is cockroach. Only unisexual. That means one gender is there. Monoecious plant having flowers of both the genders, male and female. Clara. Dioecious plant only one type of flowers, that is Marchantia. Bisexual flower, sweet potato. Flower having both the reproductive parts. So I am just going through the chapter. If there something is important is there, I will just mention. So chromosome numbers are here, diploid and haploid both. Human being is 46 and haploid 23. Diploid 46, haploid 23. You have understood and read this all in the earlier classes. Housefly diploid 12, haploid no chromosome is shown. Rat, there is no diploid chromosome, only haploid is there 21. Like this, there is a table. So students, I think that this has made this video will help you to some extent to remember the chapter of reproduction in living organisms. With that, I am ending this video and will come again with the important aspects in my next videos. The fertilization I have already mentioned. Parthenogenesis also I mentioned. Fertilization is also known as syngamy. So all these things are there in your book. If anything more important is there, I will come back again in the next videos. Thank you very much. God bless you all.